सो येस मीट माय एजुकेशन आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक समस्त को स्वागत। जेमती कि आपण माने जानिछंती जे प्रत्येक दिन आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम जहाँ भी रहा ओटीईटी एंड सीटेट एंड ओएसटेट एंड सीएसटी जेटीसी तापई कौन होची ना किछिटा क्वेश्चंस एंड आंसर्स जोटा कि आपण मानक एग्जाम ओरिएंटेड एंड एग्जाम रिलेटेड जोटा कि हाई चांसेस अच्छी आपण मानक एग्जाम रे आसीबो बोली तारी गाणी क्लासेस चली तो निश्चित रूप से आपण माने वीडियो को देखंतु। जदि वीडियोटी आपण मानक भल लागे ताले वीडियो को लाइक करंतु अन्य मानक सहित शेयर करंतु। जदि चैनल रे नुआ और चैनल को सब्सक्राइब करि नाथि ताले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल घंटी को निश्चित रूप से दबाई दिंतु। तेबे आज आम टॉपिक नहीं आरटी एक्ट सर्वशिक्षा अभियान एंड मिड डे मील स्कीम एंड प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन उपरे किछटा क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आशा करी आपण मैंने समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देखिए एंड क्वेश्चंस रे आंसर देबे आपण मानकर नॉलेज को बहुत भाव में बढ़ेबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ द किंडरगार्टन। ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेसरी, सेकंड डुई, थर्ड रोजे, फोर फ्रॉवेल। देखो किंडरगार्टन प्रोसेसटा को किए कहीदेले फ्रोबेल कहीदेले किए कहीदेले ना फ्रोबेल कहीदेले। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिड जॉन डुए बिलीव इन। जॉन डुए को फॉलोइंग स्टेटमेंट रे बिलीव करूथिले क्यूरियोसिटी इज नॉट इनेट rather it is acquired. Learners must be observed in the classroom but there is no need to give them feedback. A learner is an active participant and problem solver. Democratic space in the classroom hinders the learning process. देखो जॉन डिओ हूँ जी भी कहतु समस्ते कौन ही बिलीव करती क्या फॉलो करती ना जो काली भी कही लर्नर गोटे एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी जॉन डिवे एडवोकेटेड लैब स्कूल्स। दिस स्कूल्स आर एन एग्जांपल ऑफ कौन ना फैक्ट्री स्कूल्स ना प्राइवेट स्कूल्स ना गवर्नमेंट स्कूल्स ना प्रोग्रेसिव स्कूल्स। देखो फैक्ट्री स्कूल्स तो आम किसी पढ़ी भी ना या विषय प्राइवेट स्कूल्स नुहे गवर्नमेंट स्कूल भी नुहे तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स जो जो स्कूल रे कि जो लैब स्कूल जो कॉन्सेप्ट अच्छी जो स्कूल कि पिला माने एक्टिव लर्नर है कि कौन करेंगे ना से माने निजर ज्ञान को संगठित करें। नेक्स्ट देखिए डिवेस एम्फासिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द क्लासरूम शिफ्टेड द फोकस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स। ऑथोरिटेटिव डिसिप्लिन ना डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स ना लिबरल थिंकिंग ना डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस। देखो एजुकेशन फोकस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट्स एटा निश्चित रूप से आपण मानकर कौन जाउची ना डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप रे जाउची। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द स्कूल इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एज पर डिवे। इट मस्ट रिप्रेजेंट द करंट लाइफ टू रिफ्लेक्ट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस इन द सोसाइटी। In the society to present material to the child to develop into understanding na none of this कोथरे जीव आपनकर आंसर आरो which of the following is the role of the school in progressive education to reflect due to development of human in society to present material into the child to develop into understanding none of the above। ए तीनोटी ऑप्शन करेक्ट नुहे काहे कि नुहे ना प्रथम ऑप्शन टी करेक्ट। इट मस्ट रिप्रेजेंट द करेंट लाइफ पिलार वर्तमान जीवन को नहीं केमिति पिलाटी ज्ञान संगठन करि परिबो तारी उपरे प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिलीव करे एंड डीवे बिलीव करंती बुझी परले। नेक्स्ट देखिबा मोर इफेक्टिवनेस in learning opportunities can be provided to students by giving detailed explanation of all topics, using more teaching aids, conducting periodical tests, basing the teaching on real life situation। देखो शिक्षण केते बेले गोटे तार इफेक्टिवनेस को अचीव करिवो
ना जितेबाला पिलार करेन्ट लाइफ एग्जांपल देकी पिला जहाँ जो परिवेश बढ़ुची ताकू नहीं जदि पाठ पढ़ा हुए ताले पिलाटी अति जल्दी भाव में शिखि पारिबो। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखिए A school founded on the progressive ideology will expect all students to कौन actively construct knowledge by participation and collaboration, follows the teacher's instruction faithfully, get good marks in all exams, learn what the teachers teach without questioning। एठी भी आपन कहिछि एई पॉइंट कथा आगुरु भी आपन कहिछि जे पिला एक्टिवली जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करूछि पार्टिसिपेशन करूछि कोलैबोरेशन करूछि जहाँ भी सिखुछि रियल लाइफ को नहीं ता सेही ऑप्शन ही सब बेला करेक्ट रहइबो। तो नेक्स्ट देखिबा कोन अछि सरला ए हिंदी टीचर सरला ए हिंदी टीचर never answers directly questions raised by student in class. Instead, she gives other students time to think of the answer, discuss in group, etc. Before leading them to the correct answer, she is following which of the following approaches to teaching? Behaviorist, traditional, na progressive, na none of these. कहा को सी फॉलो करछंती गोटे पिला क्वेश्चन कले से तो डायरेक्टली आंसर दउनांती ताको डिफरेंट डिस्कशंस माध्यम रे आंसर्स करउछंती। तो को ऑप्शन टी आपनकर ठीक रहइबो बिहेवियरिस्ट ना ट्रेडिशनल ना प्रोग्रेसिव रहनती निश्चित रूप से एटा गोटे प्रोग्रेसिव एजुकेशन नो एग्जांपल टीचर समस्त सहित ग्रुप डिस्कशन करी आलोचना करी प्रॉब्लम को सॉल्व करछंती जो एथरे पिलार दुईटा लाभ होउची पिला एक्टिवली पार्टिसिपेट होची एंड तार कोन होची ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ुची कारण से जेहेतु निजे डिस्कशन करी करूछंती बुझियला। तापर देखबा ए प्रोग्रेसिव टीचर शुड ऑलवेज मोटिवेट हर स्टूडेंट्स टू कौन करिया मोटिवेट करती आस्क ऑल द क्वेरीज दे हैव acquire knowledge of the current of the content given, interact actively in any discussion in the classroom, participate occasionally participate करने मतलब भी किसी नहीं ऑप्शन 8 रंग गला ask all the queries they have जदि सब क्वेरीज करिवे ताले पाठ केतले पढिबे एटा भी नुहे acquire knowledge of the content given खाली जे गोटे कंटेंट ऊपर नॉलेज पाइले तार भी किसी वैल्यू रहइबनी कौन करिवे इंटरैक्ट इन एक्टिवली इन एनी डिस्कशन इन क्लासरूम भितर जो शिक्षण कार्य होउची तादरे जेते की इंटरैक्शन होबा कथा सब जिनिस को इंटरैक्ट करि परिबे। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इट कंसीडर्स ईच चाइल्ड एज द सेम integrated curriculum approach is used, less emphasis is laid on textbooks and curriculum is designed as per interest of the children। question पचारछि कोन which of the following is not a basic feature of progressive education कोटा हबा आंसर आपनकर प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखंतु नॉट पचारछि कोटा नुहे इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोच इज यूज्ड हां एटा होची लेस एम्फासिस ऑन लेट टेक्स्ट बुक को सब बेले आवश्यकता नहीं पिला को लाइव एग्जांपल देखे कि पाठ पढाई हबो आमे कंटेंट जानि गले किंतु ताको आधार करी कि पाठ पढाई परिबा बही को बेसी न जाई कि करिकुलम इज डिजाइन्ड एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आ बाकी बळिला कोट इट कंसीडर्स ईच चाइल्ड एज द सेम प्रत्येक पिला तो समान नुहे जेहेतु एटा प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता सॉरी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जेहेतु होती प्रत्येक पिला समान नुहे कहीं टीचर जान टीचर तक माने एक्सपोज करनी जे कौ पिलाटी भल पढ़ी कौ पिलाटी खराब पढ़ुची टीचर एमितिया वे करिवो जे सपोज गोटे पिला पठन क्षेत्र में किसी दुर्बल अच्छी ताकू नहीं कि जो मैंने सबल तांका ग्रुप रे बसैबो टीचर आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंग टू दैट ही विल प्लान। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए मॉन्टेसरी एजुकेशन इज बेसिकली फॉर मॉन्टेसरी एजुकेशन टा कहा पे बेसिकली वुमेन्स एजुकेशन ना टीनेज चिल्ड्रन ना ओल्डर स्टूडेंट्स ना यंग चिल्ड्रन कहा पे वुमेन पे नुहे टीनेज पे नुहे ओल्डर को पे नुहे केवल यंग चिल्ड्रन को पे तो निश्चित ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन अदर्स teacher and students draw on one another's expertise while working on complex projects related to the real world problems in a dash classroom teacher centric na social constructivist
ना ट्रेडिशनल ना कंस्ट्रक्टिविस्ट को टाइप रो क्लासरूम रे टीचर और स्टूडेंट मिलित भाव उभयंकर ध्यान आकर्षण करती जोटा कि सॉल्व करे क्या ना पृथ्वी जो रियल प्रॉब्लम अच्छी ताको सॉल्व करे सेटा को क्लासरूम रे संभव हो पारे आपण पे क्वेश्चन अछि देखो रियल वर्ल्ड कथा जदी आसिला जदी रियल वर्ल्ड कथा आसिला ताहले सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कथा को आमे एम्फासाइज करिया तो निश्चित ऑप्शन नंबर 2 टा ही करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिबा ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन कहा को फोकस करे आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस ओनली साइंसेस ओनली आर्ट्स ना सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेस ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन देखो एटा ଗୋଟେ ଭଲ क्वेश्चन आर्ट्स एंड सोशल साइंस ऊपर फोकस करे किए ना ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नेक्स्ट देखिबा कोन अछि Selja, a social science expert, wants her students to give creative answers to her questions. For this to happen, she should lecture them on the subject, ask questions from the textbook exercises, ask open-ended questions which are not restricted to a given framework, maintain a high level of discipline in the classroom. कोट आंसर आपण कर रहयो देखंतु निश्चित रूप से से कौन करिपा ना ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारिबो जोटा कि केवल बही भितर नथिबो सपोज सी सोशल साइंस पढुची जो एमिति गोटे प्रश्न ता मनक आसिला जोटा कि बही रे नाही ताक कोट चापी दबा नाही तांको सुविधा सुजोग दबा जे सी केमिति भलो भाबे सटीक भाबे आंसर्स दियंतु बुझियला नेक्स्ट देखिबा कोन अछि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहबा नेक्स्ट देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन की गोटे ट्रेडिशनल एजुकेशन फीचर स्टूडेंट्स ओबे डिसिप्लिन इन द क्लास parents are treated as the primary teachers society is an extension of the classroom na none of the above देखंतु ट्रेडिशनल एजुकेशन जते बेले थिला आपणकर पिला बेले आपण पढिथिबे बा न पढिथिबे बा आपणक पूर्वरु जो माने पढुथिले ट्रेडिशनल एजुकेशन जते बेले थिला सेतल कोन स्टूडेंट्स ओबे डिसिप्लिन इन द क्लास पिला माने क्लासरूम रे निरवता रक्षा करिवे क्लासरूम रो जहा जहा भी गाइडलाइंस रहिला ताकू स्ट्रिक्टली फॉलो करिवे बुझियला नेक्स्ट देखिबा ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग ना लर्निंग बाय लिविंग ना ऑल ऑफ द अबव ना नॉन ऑफ द अबव देखंतु चाइल्ड सेंटर एजुकेशन माने शिशु केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था रे कोन पिला शिक्षण माध्यम सॉरी पिला कार्य करी शिखिबो नेक्स्ट कोन अछि लर्निंग बाय लिविंग पिला लिविंग रु भी किसी शिक्षा ग्रहण करिवो बंचिबा शैली रु भी किसी शिक्षा ग्रहण करिवो कार्य कर भी किसी शिक्षा ग्रहण करिवो तो निश्चित दुईटा ऑप्शन ठीक तेणु ऑल ऑफ द अबव सहित आमे जिबा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट देखिबा द बेस्ट लर्निंग इज दैट इन व्हिच कोटा कोटे बेस्ट लर्निंग अप्रोच इट इज गिवन बाय ए नॉलेजेबल टीचर इट pupils learns themselves it is given by using educational technology and none of the above कोटा हम बेस्ट लर्निंग अप्रोच कोटा इट इज गिवन बाय ए नॉलेजेबल टीचर शिक्षक जदि सब किछि जानले ताले मतलब कोन अछि किछि नै द pupils learns themselves हां पिला माने से माने निजे केमती ज्ञान को संगठित करबे कंस्ट्रक्ट करिवे से माने निजे केमती सिखिबे इट इज गिवन बाय यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देले कोन अछि पिला यदि पाठ न पढ़ले तो निश्चित ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होबे नेक्स्ट देखिबा which of the following is not a feature of child center education कोटा कोटे child center education कोन नुहे फीचर नुहे डी नॉट देछि नेक्स्ट कोन देखिया क्वेश्चन अछि ऑप्शंस अछि it makes learning interesting and meaningful it stresses on timely completion of the syllabus it provides complete freedom to the child to grow naturally growth of the child is a priority देखंतु पिला कोटा स्ट्रेस दउछि जो जगह रे से नेगेटिव पॉइंट तो निश्चित रूप एटा हबो नाही it stresses on timely completion of the syllabus next देखिबा कोन अछि a teacher because of his or her democratic nature allows students to sit all over in the class some sit together and discuss or do group reading some sit quietly and read by themselves a parent does not like it which of the following
मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन। गोटे शिक्षक छुआ को अलाउ कर देछि तुम एकाठी बस पाठ पढ़ बा जेनसी पाठ पढ़ एकुटिया बस पाठ पढ़ गोटे पेरेंट देखी पेरेंट को भल लगे तो टीचर कौ वे ये जिन को हैंडल करेंगे सिचुएशन को। पेरेंट्स शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन of their word. Parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher. Parents should take away the child from the school। देखो parents should complain against the teacher तो आर किसी वैल्यू नहीं कौन कंप्लेन करियो। पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन यदि सेक्शन चेंज कर सेपटे भी सही भाया टीचर मिले सही अप्रोच रे पाठ पढ़ेले नहीं। पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम हाँ यहाँ हो पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी ना पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल ना एटा भी नुहे तो निश्चित ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ in the context of the basic principle of child centered education match the following कोटा ए कोड देइछि कोड सहित आपण माने नंबर को मैच करिवे। देखंतु social learning as a method and a goal models to conduct respectful arguments and conflict resolution एटा ए सहित रहिबो। having access to guidelines and opportunities for self assessment of their performance orientation on the needs of the children ऑप्शन नंबर बी आ सहित रहिबो। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि एक्ट तापरे सी कोऑपरेशन एंड डिस्कसिंग scholastic topics with others देखंतु addressing performance assessments in an encouraging manner आ सहित रहिबो। ता के बळिला डी बळिला having a say in the planning and design of the topics or units of instructions it actively self regulated learning को जीवो। बुझियला ना नहीं बुझियला नहीं। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि which of the following will foster creativity among learners teaching the students the practical value of good education na providing opportunities to questions and to nurture the innate talents of the learner and emphasizing achievements goals from the beginning of the school life coaching students for good marks in examination कोटा रहिबा आपनकर सटीक आंसर किए फोस्टर कराए बा बूस्ट अप करे क्रिएटिविटी कारण लर्नर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनर टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर ऑप्शन नंबर 2 टा ही एई वैल्यू को देखौची जोटा पिला भल भाबरे पिला एक्टिवली पार्टिसिपेट करिकि तार निजर टैलेंट को बढ़ाई परिबो। नेक्स्ट देखिए कोन अछि which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level eagerness to teach the patience and perseverance the competence in methods of teaching and knowledge of subjects the competence to teach in highly standardized language। प्राइमरी स्कूल गोटे टीचर कौन रहा दरकार आ भितर को गुणटी रहा दरकार क्वेश्चन पचार देखो खाली पाठ पढ़ाई इगरनेस थिले हेई परिबनी पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस थाई कौन करियो जदि पाठ न पढ़ेबो कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग हाँ एटा हेई पारे एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट रो नॉलेज थिबो एंड मेथड ऑफ टीचिंग रे कोन हेतिबो ना से कॉम्पिटेंस हेतिबो तो निश्चित ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होबा। नेक्स्ट देखिए कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is a feature of progressive education flexible timetable and sitting arrangement na instruction based solely on prescribed textbooks na emphasis on scoring good marks in examination frequent test and examination कौन होबा एटा क्वेश्चन नंबर 23 देखंतु फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हेतिया दरकार एंड सिटिंग अरेंजमेंट रे पिला माने बसी परथिया दरकार इंस्ट्रक्शन बेस्ड हबनी एम्फासिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स हबनी पिला पाठ पढिया दरकार खाली मार्क ऊपर हेले मतलब कोन अछि फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन नाही ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होबा। नेक्स्ट देखिए कोन अछि क्वेश्चन नंबर 24 the emphasis from teaching to learning can be shifted by focusing on examination result na adopting child centered pedagogy na encouraging rote learning na adopting frontal teaching देखंतु
शिशु द एम्फासिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड केमी ना जो शिशु केन्द्रिक शिक्षादान आम ग्रहण करिया तो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी बुझीगला नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी in the progressive model of education as implemented by CBSE socialization of children is done in such a way so as to expect them to give of time consuming social habits and learn how to score good grades be an active participant in the group work and learn social skills देखो गुड ग्रेड संगे किसी मतलब आर ना सोशल स्किल्स हाँ हो पारे prepare themselves to conform to the rules and regulations society without questioning कहीं पिलार अधिकार अच्छे प्रश्न पचारि पारियो accept what they are offered by school irrespective of their social background नहीं कहीं तार जहाँ social background आर टी से कहूँ पाठ पढ़ो से अनुसार तो निश्चित ऑप्शन नंबर 2 टा करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखा कौन अच्छी in the context of progressive education which of the following statements is true according to John Dewey there should not be a place for democracy in classroom students should be able to solve social problems themselves curiosity doesn't belong to the inherent nature of students rather it is to be cultivated and students should be observed and not to heard in the classroom जॉन डुए कहते कौन कहते सोशल कंटेक्स्ट उपर कहते सोशल सोसाइटी उपर कहते सोशल प्रॉब्लम उपर कहते निश्चित स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स बुझीगला नेक्स्ट देखिए कौन एटा ताकर अछि हमर ताकर से जहाँ कहते थ्योरी एथर अछि कि बुझार आवश्यकता नहीं नेक्स्ट देखिबा टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोरीज एवरीथिंग scores or marks obtained by the learner involving the learner for actively participation and mastering learning of concepts by the learner teachers in order to help learners construct knowledge केतेबेले ना जेतेबेले गोटे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करियो बुझियाला ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट देखिबा children have the potential to create knowledge and make meaning from this perspective the role of a teacher is that of communicator and lecturer facilitator director and negotiator कौन हम क्वेश्चन नंबर 28 तो टीचर कम्युनिकेटर लेक्चरिंग मेथड कले किसी मतलब नहीं डायरेक्टर हेले किसी नहीं नेगोशिएटर हेले किसी नहीं फैसिलिटेटर हवा दरकार पिला सब सुविधा दे पार्थियो दरकार पिला सहित रही पार्थियो दरकार जितेबाला पिला किसी प्रॉब्लम आसो बुझीगला नेक्स्ट देखिबा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन सिटिंग इन ए कॉर्नर लर्निंग इन ए restricted environment activities that do not include play hands on activities for kids देखो पिला को गोटे कॉर्नर बस लाभ कौन हम लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड नेगेटिव वर्ड छाड़ दिंतु activities that do not include play पिला खेल माध्यम क्रीड़ा माध्यम शिक्षा ग्रहण करे कहीं करिवेनी hands on activities for kids option number 4 ही करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स giving moral education to the children asking the children to follow and imitate the teacher giving primacy to children's voice and their active participation letting the children be totally free देखंतु active participation कथा अछि एटा हबो करेक्ट primacy to children's voice option number 3 correct answer next देखिबा which one of the following situations is illustrative of a child centered classroom a class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize the notes memorize कथा आसिला नोहे a class in which the textbook is the only resource the teacher refers to only resource teacher पे काहे कि हबो textbook a class in which the students are sitting in groups and teacher takes turns to go to each group हाँ इटा ही पारे a class in which the behavior of students is governed by rewards and punishments the teacher would given them देखंतु एटा भी नुहे पनिशमेंट कथा आसिला नुहे तो निश्चित ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिबा इन ए प्रोग्रेसिव in a progressive classroom setup the teacher facilitates learning by providing an environment that it restrictive na discourages inclusion na encourages repetition na promotes discovery progressive classroom in a progressive classroom setup the teacher facilitates learning by providing an environment that
कोटा करिवो रेस्ट्रिक्टिव हबो नाइ हबनी डिस्करेज इनक्लूजन हबो हबनी डिस्करेज काई करबे इनक्लूजन तो गोटे भलो कथा समस्त मिसिक पाठ पढ़िए एनकरेजेस रिपिटेशन रिपिटेशन करिया कोन दरकार रिपिटेशन प्रमोट्स डिस्कवरी पिला माने केमती नुआ नुआ जिंस को डिस्कवरी कर पारे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहे तो ये तो थिला आजी आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपनकर प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन तो आई होप आपण माने को भलो भाव एंजॉय करिथिबे एंड भलो भाव आपण माने यार आंसर्स भी गेस करि पारिथिबे तो आपण माने जति जानि छंती जे प्रत्येक दिन आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम जहाँ भी रहिला टीचिंग एग्जाम्स ता लगी किछिटा क्लासेस होची एंड दैट क्लासेस थ्योरी नुहे जो गुडा कि आपण मानकर एग्जाम रे आसीबो आपण माने देखंतु पढिबाटा इंपोर्टेंट नुहे परीक्षा रे जो टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो ताकू ही प्रैक्टिस करबा इंपोर्टेंट पढिबा जति इंपोर्टेंट नुहे आपण पढंतु थ्योरी पढंतु माने तार किछि मु ताकू खराब कहूनी किंतु आपण माने जते प्रैक्टिस करिवे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आपनकर सेते आइडिया जनरेट हो बुझी पारछंती तो निश्चित रूप से जदि वीडियो आपण मानक भल लागिथिबो ताले वीडियो को लाइक करंतु अन्य मानक सहित शेयर करंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब करंतु पुणी देखाबो आ गोटिए नुआ वीडियो रे से पर्यंत प्रिपरेशन को जोरदार रखंतु एंड आपनकर लक्ष्य स्थल रे पहुंचतु हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच।